जब स्कूल जाते थे कब कोई हमारा ये टेंशन नहीं होता था, क्योंकि हम खेत में काम करके के हम स्कूल आए हैं, घर जाएंगे, उसके बाद हमको खाना मिलेगा। अब हम लोग जब घर से यहाँ से ऑफिस घर जाते हैं, तनख्वाह डीए बढ़ा है, कितना रुपया है, कब मिलेगा। हमारे दीदी ने कुछ पहले बताया सीनियर प्रोफेसर की नहीं हो रहा है, तो मैडम सीनियर प्रोफेसर के लिए एप्लीकेट तो मैं भी हूँ। इतना सीरियस हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, कपड़ा ही फाड़ेंगे। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर हमको बातों में बोलना पड़ा, मैडम साहब ने 3 बार गया है दिल्ली के ऑफिस में, फाइल पड़ा हुआ है, हमारे भी डेमोन्स्ट्रेट उसके आगे है बड़े बड़े बाबू है, उनको ब्यूरो कहते हैं, उनका क्रेसिया काम ना करे, डेमोक्रेसी क्या करेगा। तो हमारा फाइल इस टेबल से उस टेबल जाता है, बोलते ऊपर गया है। अरे कितना ऊपर, पूरा बिल्डिंग तो एक ही फ्लोर में है भाई, फाइल कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे आता है। लोगों को दिमाग में ऊपर नीचे जो ब्रिटिश वाले ने घुसा के गया है, उससे निकालना भी मुश्किल हो रहा है, मगर ना निकाल के जीना भी मुश्किल हो रहा है। ये जैसे ये अंधा गली में दौड़ते दौड़ते नाक को घुसेटेंगे वॉल के अगेंस्ट में, और क्या होगा। ये हमारा बेहतर नौकरी, बेहतर नौकरी, बेहतर नौकरी, बेहतर नौकरी, कुछ नहीं भाई, कुछ रुपया ज्यादा मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो भाग जाएंगे, प्यार से बुलाओ आ जाएंगे, मगर हमको कोई डोंट आस्क मी टू रन अगेंस्ट अ ब्लाइंड एली। बंद गली में दौड़ के कोई को कहीं नहीं जा पाया आज तक। हमको वो दीवार तोड़ना है। ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर ये कॉन्फ्रेंस सेमिनार में डिस्कशन तो खत्म हो जाएंगे, तो हमारा जमीन ऐसे ही पड़ा रहेगा और हम चावल के लिए हरियाणा की तरफ हाथ करके बैठे रहेंगे। अगर मिले तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिला। दोस्त किसका है? गवर्नमेंट का। जमीन तुम्हारा है, कोई मंत्री मिनिस्टर जाएगा उसका हाल चलाने में। हम क्या बाबू बन गए, हमको हाल चलाना भूल गया हूं मैं। Know yourself to better before you know us. आत्मनिर्भरता तभी आएगा जब आत्मज्ञान आएगा। If I sell myself to others for the sake of my temporary benefits, सेल्फिश किसको कहते हैं? जो मार्केट में फिश सेल करता है उसको सेल्फिश नहीं कहते। अगर अंग्रेजी को हम ये इंग्लिश संधि बना देंगे, वन हु सेल्स फिश इज सेल्फिश। ये भी तो सेल्फिश है भाई, लिखा है अक्षर में सेल्फिश। वी आर ऑल सेल्फिश। सोचते हैं समाज के बारे में, अंडरलाइन टेक्स्ट इज अपने बारे में। भाषण देता है स्टेज पर, जब उतारता हूं तब मैं खुद बन जाता हूं दूसरा कोई। दूसरे को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने आप को ये सेल्फ क्रिटिक, मुझे क्या करना चाहिए वही करो, किसी से सुझाव मत सोचो, उसका अपना प्रॉब्लम है। तो मेरा सजेशन यही है भाई, शिक्षा हम लेंगे मगर अपने खेती बाड़ी भी है उसको भी करेंगे, क्योंकि मेरा शाम को खाने का टेंशन नहीं रहेगा। जिसका घर में खाना नहीं होने का टेंशन होता है वो ज्ञान किस तरह कैसे आएगा। किताब नहीं लेते आते हैं बच्चे लोग स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। हमारी यूनिवर्सिटी में वो लोग कहते हैं सर नौकरी मिलेगा क्या? तो नौकरी के लिए अगर यूनिवर्सिटी आते हैं तो शिक्षा लाइब्रेरी में हमारा पड़ा हुआ है। 2 करोड़ का लाइब्रेरी का किताब खरीदते हैं साल में। पिछले 2-3 दिन पहले भी मीटिंग गया है, तो मैं बोला चंपेश्वर भी होगा यहाँ, भाई ये किताब पढ़ता है कौन? चंपेश्वर से बातों बोल दिया सर कम से कम आप तो आते हैं।
दिल्ली तो रुपया दे रहा है, हम लोग किताब खरीद रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड में है। ई बुक में कहाँ मिलता है किताब मेरे को पता नहीं है। रिजल्ट भी अच्छा है, हमारे साथ जी कह गए हैं यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गया। अरे भाई गांव में जाके किसी को देखिए तो लिटरेसी क्या होता है। अपना नाम जो इस दूसरे की मदद से लिखता है उसको लिटरेट कहते हैं। इससे तो बेहतर लिटरेट है गांव में काम करना। तो इससे सभा में फिर भी कुछ आएगा, 2 दिन के हमारे डिस्कशन से कुछ तो निकलेगा। उसको इम्प्लीमेंटेशन करके कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशन में ही नहीं होता है। जिसके बारे में सोच रहा हूँ उसी के पास जाना पड़ता है। रूरल डेवलपमेंट राजेश है, गांव में जाके गांव को डेवलप करना होता है, यहाँ कॉन्फ्रेंस बुला के नहीं होता। थैंक यू एवरीबॉडी। Professor Shyam Das, who happens to be my very dear colleague in my own department, is for holding any audience in rapture by talking and taking us back to our roots. He is a man of roots and he speaks of roots. Thank you, sir. May I now request the chief guest of our inaugural program today, Professor Prabhashankar Shukla, Honorable Vice Chancellor, Northeastern Hill University, Shillong, to enlighten the audience with your words, sir. Dignitaries present on the dais, Vice Chancellor of the University, Professor Gauri Shankar, Pinga Prasad Prashanji, Guest of Honor, Professor Satyadev Poddar, Professor Syamal Das, Professor Badal Kumar Das, Badal Kumar Datta ji, Dr. Rajesh Kumar, Dr. Timur Tripathi, Registrar of the University, Deepak Sharma ji, Assam Open University के कुलपति Vice Chancellor R.V. Das ji, other professors came from different organization, institution of the country. Today we are here to discuss about implementation of new education policy. Different speakers share their views in different ways. Some are about the actual condition of our education system. Some speaks about the importance of the education and role of the education in human life, and some also speaks about the ancient and past history of our education system. Why a change in education system is required. And the theme of the conference, शिक्षा से आत्मनिर्भर भारत,
self-reliant India or self-reliant Purvottar through education. Money. Just like an education, teaching, research, and extension are main part of our education system. We are already teaching or taught our students in different subjects. Researchers are also going, and one speaker clearly mentioned that more than search done by the Purvottar organization. But what is the weakness? Ever we think about our weaknesses? कभी हमने इस पे सोचा कि मेरी weaknesses क्या हैं? अगर I just can imagine there are about central universities in the northeast, 9 traditional and 1 agriculture, and approximate 50 private
this mobile is not for me. This is only for helping tool. हम जिस रूप में इस मोबाइल ने मेरे ऊपर जितना इम्पैक्ट डाल रखा है, इतना प्रभावित कर रखा है, इसके प्रभाव में हम जितना भी जाएंगे, तो एक ही शब्द है कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको एक घंटे में, एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा का समय मिला। It's only depend on the individual, how they are going to utilize their times, how they are managing their time. Are they able to manage their time or not able to? इस समाज के व्यक्ति ने, इस समाज से निकला हुआ व्यक्ति 24 घंटे को 24,000 घंटे में भी कन्वर्ट किया है। और ये भी डिस्कशन हमारे समाज में भी है। किसी से पूछिए तो नो वन इज फ्री, एवरीबॉडी इज सेइंग आई एम वेरी बिजी। कोई भी ऐसा नहीं, किसी से भी पूछ लीजिए, एवरीबॉडी जस्ट गोइंग सर मैं तो बहुत ही व्यस्त हूं। बट आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर द आउटपुट ऑफ योर डे? Only few are in position to say that this is my everyday output. हमको अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। 24 आवर के विषय में सोचना होगा। और टेक्नोलॉजीज जो मेरे ही दिमाग की उत्पत्ति है, वो मेरे ऊपर भारी नहीं होनी चाहिए। इस तरफ भी हमको ध्यान देना होगा। क्योंकि मुझे अभी भी एक ध्यान में आ रहे थे बात, प्रेम की गंगा बहा दो। किसी ने, किसी स्पीकर ने कहा था प्रेम की गंगा बहा दो। तो मंच पे गंगा जी भी हमारे पास हैं। प्रेम के गंगा बहाने की बात तो हमने कर दी, लेकिन गंगा नदी की जब बात करें तो पानी उसमें नहीं है। What are the reasons behind? Are we utilizing our natural resources in judicious manner? Are we not utilizing our natural resources in judicious manner? दूसरी चीज मुझे याद आई कि हमारे पास दीपक जी भी है और तिमर जी भी है। दीपक जी भी है और तिमर जी है। तिमर जी ने बीड़ा उठाया है कि नॉर्थ ईस्ट में दीपक जलेगा। लेकिन अच्छी तरीके से तभी जलेगा जब ये बैठ What? इंस्टीट्यूशंस को परिणाम आने वाले समय में हमें मिलेगा। और जितना अच्छा नॉलेज हम इनके दिमाग में इनकलकेट करेंगे, शो करेंगे, डिसेमिनेट करेंगे, वही पूर्वोत्तर का भविष्य होगा, वही इस देश का भविष्य होगा। इसी को हम आपके बीच में छोड़ते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for those illuminating words.
May I now invite Professor Ganga Prasad Basain, Honorable Vice Chancellor of Tripura University, to deliver the presidential address. सभी को नमस्कार। पूर्वोत्तर ज्ञानोत्सव के इस 2 दिन के गोष्ठी के उद्घाटन सत्र में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे अति आदरणीय मित्र और पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलोंग के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर प्रभाशंकर शुक्ला जी, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप पर उपस्थित है मेरे आदरणीय मित्र और महाराज बी विक्रम विश्वविद्यालय अगरतला के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर सत्यदेव पोदर जी, शिक्षा संस्कृति उपन्यास के रीजनल कन्वेनर और इग्नो के रीजनल डायरेक्टर कोहिमा के डॉक्टर तिमिर त्रिपाठी जी, शिक्षा संस्कृति उपन्यास के शोध प्रकल्प के राष्ट्रीय कन्वेनर हमारे भाई डॉक्टर राजेश्वर कुमार जी, त्रिपुरा विश्वविद्यालय के डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स प्रोफेसर श्यामल दास, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस प्रोफेसर बादल कुमार दत्त, और यहाँ पर उपस्थित हैं इस ज्ञानोत्सव के कोऑर्डिनेटर और हमारे कुल सचिव डॉक्टर दीपक शर्मा जी। इस सभागार में उपस्थित हैं हमारे बहुत ही आदरणीय मित्र और हाल में कृष्णकांत हेंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद दास जी, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य कैंपस अगरतला के आदरणीय डायरेक्टर प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति जी, नव नालंदा महावीरन नालंदा बिहार से आए हुए हमारे मित्र प्रोफेसर विजय कुमार करण जी, मणिपुर विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट के डायरेक्टर और मेरे मित्र प्रोफेसर सीएच इवॉल मैके जी, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश से आई हुई डॉक्टर प्रीति सुधा मेयर, कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी से आई हुई डॉक्टर राश्मिता बर्दलोय, फिर नेहरू के हमारे हिंदी विभाग के प्रोफेसर और वहाँ के यूजीसी ह्यूमैनिटीज डेवलपमेंट सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर हितेंद्र मिश्रा जी, हमारे त्रिपुरा विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर चंद्रिका बसु मजूमदार, और इसी विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग के विभिन्न शिक्षक शिक्षिका मेरे कॉलीग, इसी विश्वविद्यालय के हमारे ऑफिसर साथी, त्रिपुरा के विभिन्न कॉलेज से आए हुए हमारे शिक्षक शिक्षिका और हमारे प्यारे विद्यार्थी, डेलीगेट्स, इनवाइटीज और आप सभी भाई बहन को मेरा त्रिपुरा विश्वविद्यालय की ओर से यह पहला पूर्वोत्तर ज्ञान महोत्सव के आयोजन समिति की ओर से और मेरी अपनी ओर से मैं आपको स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। जैसा कि आज का विषय शिक्षा से आत्मनिर्भर पूर्वोत्तर, हमें क्यों ज्ञान उत्सव करना पड़ा, इसका उद्देश्य क्या है और इस पर हम क्या क्या चर्चा करेंगे। मेरे पूर्व वक्ता डॉक्टर तिमिर त्रिपाठी जी, डॉक्टर राजेश्वर कुमार जी और अन्य वक्ताओं ने रखा, मैं उस पर नहीं दोहराऊंगा। मैं आज का विषय पर जाऊंगा। आज का विषय है शिक्षा से आत्मनिर्भर पूर्वोत्तर। हम पूर्वोत्तर भारत में रहते हैं, पूर्वोत्तर भारत और इस राज्य में शिक्षा की स्थिति और भारत सरकार ने दिया हुआ नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हम पूर्वोत्तर भारत में भी शिक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो जाए। हम सब जानते हैं हमारे देश के महामहिम यशस्वी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर का एक बहुत बड़ा नारा दिया है। सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, फिर बाकी शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर जो भी हो, सभी क्षेत्रों में हमें सेल्फ आत्मनिर्भर, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए। How can
नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो मैं संक्षिप्त में हमारे जो पूर्वोत्तर के जो उनकी जो हायर एजुकेशन का शेड्यूल बताना चाहूंगा। जैसे हम त्रिपुरा में हैं, तो यहाँ पर मात्र विश्वविद्यालय, महाराज वीर विक्रम विश्वविद्यालय, फिर इफा यूनिवर्सिटी जैसे, तो ये विश्वविद्यालय और करीब करीब 55 कॉलेज है, उसमें से 24 है इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज 2 है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, फिशरी कॉलेज है, फार्मेसी के कॉलेज है, फिर आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीएड कॉलेज है। करीब करीब जो मुख्य मुख्य विषय है उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़ाई होता है। अब पड़ोसी मणिपुर को देखें, जहाँ से हम आते हैं, यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यानी कि 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मणिपुर में। फिर वहाँ पर 4 स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर अभी 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गए। वहाँ पर 4 मेडिकल कॉलेज हैं, 3 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और बाकी सब विषय कॉलेज भी वहाँ पर होते हैं। तो आसाम, जहाँ से हमारे कई डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं, हमारा पड़ोसी राज्य है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे धनी राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। वहाँ पर तो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 1 आईआईटी, 2 एनआईटी, फिर उसके अलावा एग्रीकल्चर का अलग से यूनिवर्सिटी है और 4 तो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और स्टेट के 12 यूनिवर्सिटी हैं। और आज ही सुबह पता लगा कि आसाम में 12 मेडिकल कॉलेज भी बने, 11 बन चुका था, अभी नलबाड़ी का आज पास हुआ, तो 12 मेडिकल कॉलेज है आसाम में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा पड़ोसी राज्य आसाम में तो बहुत सारे शिक्षा के संस्थान हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश जाइए, वहां पर एक एनआईटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी और बाकी 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और भी आने वाले हैं, ऐसा खबर मिल रहा है। फिर अपना मेघालय, जहाँ हमारे आदरणीय कुलपति प्रभाशंकर शुक्ल जी आए, वहां पर नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पूर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1971-72 में हुई थी, वो भी मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। उसके 2 कैंपस, एक तुरा में है, एक शिलोंग में है। फिर वहां तो कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और कई बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। वो तो पूर्वोत्तर भारत का ब्रिटिश के समय का एक राजधानी हुआ करता था, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे ही है मेघालय। फिर नागालैंड, मेरा पड़ोसी राज्य, वहां पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक एनआईटी और अभी 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। फिर सिक्किम थोड़ा दूर जाएंगे, वो नॉर्थ ईस्ट में आता है, वहां पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक स्टेट यूनिवर्सिटी और 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज। तो इस तरह मिजोरम में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक एनआईटी है और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इम्फाल का वेटरनरी कॉलेज भी मिजोरम की राजधानी आइजोल में है और इफा यूनिवर्सिटी का कैंपस वहां भी है और अभी एक और नया प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ रहा है। इस तरह और मिजोरम की अगर हम शिक्षा का जो रेशियो देते हैं ना, लिटरेसी रेशियो, तो भारत में दूसरा नंबर पर आता है। और पूरे पूर्वोत्तर भारत का अगर हम लिटरेसी रेट देखेंगे तो ये पूरे भारत का जो औसत है उससे वो अधिक ऊपर है। फिर भी हमारा शिक्षा से आत्मनिर्भर पूर्वोत्तर। तो अब जहां तक हमारा आज का एक और विषय है, आज का नहीं कई विषयों का, जैसे हम तो जब एनईपी की घोषणा हुई 29 जुलाई 2020, उसके बाद कई जगह कई स्थानों पर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, त्रिपुरा भी, मणिपुर भी, नॉर्थ ईस्ट से बाहर भी कई जगह हम सभी गए और हमने अपना विचार रखा और अपना वहां के लोगों का विचार भी सुना। ये एनईपी इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर हमने कोरोना के ठीक बाद फरवरी 28 और 29 को गुवाहाटी विश्वविद्यालय में शिक्षा संस्कृति तथा न्यास और गुवाहाटी विश्वविद्यालय हम मिलकर 2 दिन का कार्यशाला रखे थे। वहीं पर हमें ये नॉर्थ ईस्ट के कुलपतियों का एक कमेटी बनाया गया था और उनका इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व भी हम लोगों को दिया गया था। तो उसके बाद हम कई जगह पर कई समय पर हम इस विषय पर चर्चा करते रहे, अभी भी आज भी चर्चा कर रहे हैं। और आज का मुद्दा है इम्प्लीमेंटेशन की डिफिकल्टी जानने का। तो मेरे समझ में पूर्वोत्तर भारत में एक बड़ी चैलेंजेस है ये जो नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भाषा के मुद्दे पर। हम सब जानते हैं कि भारत में तो कई भाषाएं बोली जाती हैं और मात्र 22 भाषाएं भारत के संविधान में रिकॉग्नाइज किया गया है, ओनली 22 भाषा।
उन 22 भाषाओं में से ये नॉर्थ ईस्ट में जो हम बोलते हैं हिंदी को छोड़ करके, यहाँ बांग्ला भाषा, असमीज भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा और बोडो भाषा, मात्र 5 भाषाएं हिंदी को छोड़कर यहाँ इस पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है। और एक चीज दिया गया है स्पष्ट रूप से कि जब हम नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेंगे, नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर हम पठन पाठन करेंगे, तो हम शिक्षा का माध्यम मतलब पढ़ाने का जो माध्यम होता है वो स्थानीय भाषा या मातृभाषा भी हो सकता है। ऐसा क्लियर लिखा है, लोकल लैंग्वेज ऑब्लिक मदर टंग प्लस भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी तो है ही। अब समस्या यहाँ पर है, जैसे मणिपुर राज्य का मैं उदाहरण देना चाहूंगा सबसे पहले कि वहां पर अभी तक माध्यम मीडियम ऑफ टीचिंग केवल इंग्लिश है, एक दो स्कूलों में मणिपुरी है, मात्र इंग्लिश है पूरे पहाड़ में और मैदान में। अब वहाँ की जाति और बोलियों के बारे में जानना चाहिए तो वहाँ के 54% लोगों की मातृभाषा तो मणिपुरी है। फिर उसके अलावा वहाँ जनजाति की अलग अलग भाषा है। एक जनजाति है जिसको हम तांकुल बोलते हैं, उनके 3 एमएलए आते हैं और उनकी जनसंख्या करीब 2.5 लाख है। उनकी अलग बोली है, वहां पर अभी तक तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाता है। दूसरा जिला है कानकोपी, जहां से हम आते हैं, वहां पर कोकी भाषा, उनकी जनसंख्या भी करीब 2.5 लाख है, वहां से भी 3 एमएलए आते हैं। उस जिले में 22 जो ऐसे हाई स्कूल है जहां पर 80% आपके जो विद्यार्थी उनकी मातृभाषा कोकी, ये अलग बोली है, कानकुल अलग, कोकी अलग। फिर उसी राज्य में 12 जैसे हाई स्कूल है जहां पर 80% जो विद्यार्थी है उनकी मातृभाषा नेपाली है। फिर दूसरा जिला है तमिल बोलते हैं, वहां पर जो है कबुई जाति रहती है, अलग बोली है। वहां अभी तो इंग्लिश है माध्यम, लेकिन वो कबुई का जो वो अलग से बोली है। अगर वो डिमांड करेंगे कि आपने दिया है नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पढ़ाने का माध्यम है मीडियम ऑफ टीचिंग मातृभाषा होगा, तो बोलेंगे कबुई भाषा में पढ़ाओ। तो उनके भाषा के तो किताब ही नहीं है, उनका तो लिपि भी नहीं है, किताब भी नहीं है, तो कैसे हम कबुई भाषा में किताब लिखेंगे और पढ़ाएंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने मणिपुर दिया, उसी तरह मेघालय, अब वहाँ 3 बोलियां हैं, एक तो खासी है, एक गारो है, एक तो जैंतिया है। अभी तो इंग्लिश माध्यम से चलाता है, उनके सारे किताब इंग्लिश में लिखे जाते हैं, रोमन लिपि में। अगर हम डिमांड करेंगे कि हमको खासी में पढ़ाओ, गारो में पढ़ाओ, तो हम खासी में कैसे किताब लिखेंगे, गारो में कैसे किताब लिखेंगे? उनकी तो अपनी लिपि भी नहीं है, रोमन लिपि से किताब लिखते हैं अभी तक। तो इस तरह की कठिनाई का सामना हमें करना पड़ेगा, अभी भी कर रहे हैं। और जहाँ तक हम जानते हैं विद्या भारती के स्कूलों में, जैसे आसाम में करीब छोटे बड़े कुल मिलाकर 500 विद्या भारती के स्कूल है। तो वहां पर तो हमने शिशु वाटिका से ही, शिशु वाटिका मतलब अपना नर्सरी और ये जो है आंगनबाड़ी से ही आसामीज मीडियम में लिखने का काम शुरू हो गया है। विद्या भारती ने यह काम शुरू किया आसाम में। अब एनसीईआरटी के डायरेक्टर प्रोफेसर सकलानी साहब है, मेरे मित्र है, मुझसे पूछ रहा था कि आप कब तक हाई स्कूल में अपने वहाँ के जो है स्थानीय आसाम पर किताब लिखेंगे? तो वो कह रहे हैं कि कमिटी बनी है, काम हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अलग अलग राज्यों में ये जो वहाँ की भाषाओं पर जो पुस्तक लिखने का काम शुरू हो गया, लेकिन जस्ट मात्र शुरू हुआ है। और हायर एजुकेशन पर जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल का तो हमें कहा गया कि मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और बंगला, ये 7 भाषाओं में बीटेक और एमबीबीएस के जो किताबें हैं उनका अंग्रेजी से अनुवाद हो रहा है, काफी हो चुका है। ऐसा दिल्ली से जब हम जाते हैं वहाँ के अधिकारी से मिलते हैं, वहाँ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और यूजीसी के माननीय चेयरमैन से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि काम हो रहा है, 50% हो चुका है इन 7 भाषाओं में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो तो वहां की भाषा हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट पर फिर आइए, पूर्वोत्तर क्षेत्र पर फिर आइए, यहाँ की इतनी छोटे जाति जनजाति जिनकी जनसंख्या 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख है, कैसे हम उनकी मातृभाषा में, उनकी मातृबोली में हम किताब लिखेंगे? ये एक बहुत बड़ा दिक्कत हमारे सामने है इम्प्लीमेंटेशन पर। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और अपना सुझाव देंगे। ये जो हमारा पूर्वोत्तर का ज्ञान उत्सव है, इस पर भी हम भाषा पर भी चर्चा करेंगे और अपना सुझाव देंगे। और मैंने तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में, जहाँ पर राजेश कुमार भी थे, मुझे सत्र का अध्यक्ष करते समय मैंने कहा था कि पूर्वोत्तर के जनजातियों की जिनकी बोली है, जिनकी अपनी लिपि नहीं है, जो अभी रोमन लिपि में लिखते हैं,
तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी की देवनागरी लिपि में उनकी पुस्तकें लिखना चाहिए, इस तरह वहां भी मैंने कहा था। तो हम यही भी कहते हैं, क्योंकि भाई हम कहेंगे और
respected Vice Chancellor of Tripura University, Professor Parsai ji, Professor Shukla ji, Vice Chancellor Nehu, all other delegates from different parts of northeastern states, the dearest speakers on the dais, and my dearest students. It's indeed a privilege for me to chair this session, and as the chairman of this session, I have to just quickly give my views because Timirji has already given me a direction that you have to finish it by 2:10, maximum 2:15, because it's a hungry man is always an angry man. So I do not want to make anyone angry because of attending this session. The theme of this session is NEP 2020 and with special reference to vocational education. Fortunately, I have two eminent speakers in the field. One is from NIT, other is from Manipur University. They have been briefly introduced. And if you look at their introduction, they know the theme better than what the chairman knows. Always it happens, and I was just giving my quick introduction, that whenever you become vice chancellor, you become jack of all trades, master of none. So I have nothing to speak, but whatever I have understood in the last 3 years of more than 3 years my gross involvement in NEP 2020, especially I was chairing the implementation of NEP 2020 in Indira Gandhi National Open University for more than 2 years before joining KK Handy State Open University as Vice Chancellor. Actually, Indira Gandhi National Open University has implemented NEP 2020 in toto, and perhaps they are doing far better than what has been far ahead of what has been expressed in the NEP 2020. And particularly with reference to skilling and vocationalization, they are doing the wonder, and they are becoming a milestone for all other conventional universities in the country. I, as a Vice Chancellor of Open University, and my training with Indira Gandhi National Open University as a Pro Vice Chancellor, and I have made it public, in many times I have made a public statement that if at all NEP 2020 has to be implemented in true spirit, then without open universities, without the help of a distance education, online education, it is next to impossible. And that is what we did it in IGNOU. That is what I have started doing it in KK Handy State Open University, Guwahati. We are making series of efforts because, if you look at the reality, what has been expressed in NEP 2020, it is practically not feasible for a conventional university to implement it because of its own limitation. There are many issues. For example, skilling of the student, vocationalization of the student. Because conventional universities are created with certain constraint, with certain restriction. You cannot give admission to more than 60 students or 70 students or 128 students in a class. And you cannot opt for this course, that course, which is confined to your program, BA, BCom, BSc, or whatever it may be. But national education policy talks about freedom and flexibility to a learner, to a student. And in 2022,
it talked about dual degree. It also talked about academic bank of credit. It talked about multi-skilling. It talks about multidisciplinary approach. It talks about professionalization. It talks about skilling of the students. If you are a student of Tripura University, you want to know fisheries. You want to know about mechanic. You want to know about plumbing. You want to know something which is going to poultry farming. You want to earn your livelihood just after completion of your education. That facility is not there in our conventional education. Conventional educations are starting, pressurized to think about it. But we are open to do it and we have started doing it. Because I completed my BCom. I completed my BBA. I completed my BA. After that, I cannot, operate my computer. I cannot do any agricultural activities. I cannot be a mechanic. I cannot be a plumber. I cannot do anything. Formally, I have not been educated, trained to do something by which I can earn my livelihood. NEP talks about it. NEP has given this freedom and flexibility to our learners in the country. Perhaps in the last 42 years of my stay in the university campus, in the last 42 years of my involvement in higher education in the country, in different universities of the country, different best institutions of the country, I realized, I appreciate our Honorable Prime Minister, I appreciate the Honorable President of India, I appreciate the Education Minister that they could with the Kasturi Rangan, that who could think of devising a national education policy which is concerned about preparing India with Indianization, preparing our students with Indian values, customs, traditions, ethos, and which is concerned about preparing our students, preparing our pass out graduates and postgraduates to be independent. हम स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं। इस सिर्फ एजुकेशन में नहीं होता है, सिर्फ फॉर्मल क्वालिफिकेशन में नहीं होता है। फॉर्मल क्वालिफिकेशन का साथ कुछ एजुकेशन होना चाहिए, कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग होना चाहिए, कुछ ऐसे एफर्ट होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, so that whenever a student pass out from the educational institution, he should not be a job seeker, he should be a job provider. That is the basic intention of national education policy, and for that efforts are made, because if you don't talk about policy formulation, those days are over. Now we are talking about NEP implementation, particularly the Purvottar context, जो कि अपना जो बात हम सुबह से कर रहे हैं, वो काम हम पूर्वोत्तर राज्य में जब कर पाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसको कर पाएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न का जो स्टेट, जो आज शुक्ला जी जो बात कर रहे हैं, क्यों बच्चे जा रहे हैं, ये भी मैं शुक्ला जी को कहना चाहता हूँ। शुक्ला जी भी अच्छे से जानते हैं उनका भाई संतोष साहब जो बता रहे हैं। कुछ बच्चों को पता नहीं है क्यों चले जाते हैं। इधर सब कुछ है, बैंगलोर जाना है, बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, इधर सब कुछ है, लेकिन हम लोग एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आज लीडर ऑफ द एजुकेशन, आज एकेडमिक्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, we have to think about in this direction, so that we have to evolve new and new vocational programs, new and new certificate programs in different vocations, so that the student have to think twice before taking a decision to go out of North Eastern states, because there is plenty of opportunity in North Eastern states than other part of the country. In the last 10 years of my visit to different parts of northeastern states, I have a deep realization that there is plenty of opportunities in the northeastern states, but we have to expose it, we have to explore it, and we have to prepare it, we have to develop it, and we have to put it before our students, before our learners, that this is there. You have to, you adapt it.
you accept it, you clear it, you develop yourself. So that you should not be a job seeker. You are not supposed to move to different parts of the country. You stay at your home. जो कि डीन साहब सुबह बता रहे थे, मेरा जमीन है लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, दोनों काम भी हम कर सकते हैं. Being a dean, being a professor in the university also, we can be job provider while doing our job, because हम लोग के we know how to delegate the authority to our people, how we have to get the work done, staying in our own position. I personally believe NEP 2020 has given plenty of opportunity to education, educational institutions, leaders of the educational institution to evolve mechanism in this regard. So much freedom, so much flexibility. It was never in the imagination of we academics who are traditional, conventional. We sometimes we say we are going to be outdated. Looking at the opportunity which has been exposed to us by the National Education Policy 2020, we should grab it. With our experience, with our realization, with our cognition, we have to think about it, how to encash the opportunity which has been given to us by National Education Policy, so that our students will feel confident of themselves. They will be skilled enough. They should have so much vocational knowledge and skill while doing their graduation and post-graduation, so that they will never move out of Northeastern state or any part of their state, country, any part of their country where they are staying. They will think of that attitude is to be prepared. That attitude is to be developed among our students, so that we can really, if we think in this direction, if we develop our educational system in this direction, if we develop new programs in this direction with the vocational focus, with skilling focus, so that it will be a greatest tribute, greatest contribution towards the implementation of NEP 2020, not only in the northeastern state of the country, but for the whole country and the whole world. Thank you, sir, for giving me opportunity to express, to start the issues which have been given to me as chairman to deliberate. And I know my speakers are very eminent, are highly involved in this issue, and I think their deliberation is going to enlighten all of you in this session. Thank you very much. I'll request my to give his address. Thank you. माइक काम नहीं कर रहे Respected chairperson, Professor Das, Honorable Vice Chancellor, Krishnakant Henry, State of University, my fellow speaker, Dr. Priti Sudhar, Justice Professor NIT, respected Vice Chancellor, Chancellor of Tripura University, eminent invitees, other scholars, young friends, a very warm good afternoon, everyone. At the outset, I express my
heartfelt thanks to the organizing team for giving me this opportunity to be against you and share some of my value points for the NDP 2020, and especially with reference to the employability and Pakistan education. Well, ladies and gentlemen, we know the world is progressing in multifaceted dimensions. At the same time, we need to strengthen our country as one of the global superpowers. That matter, competition as such. Thank you. The competition is also becoming so much stifling day by day. And we know that the only resources India is having, the most important is the human capital. So even for the sustainable developmental activities, we focus on the society, we focus on the environment, we focus on the economy. The fourth pillar is now the human capital. So keeping these things in mind, that today's youths, the tomorrow's future, what India is going to become in the next few years down the line, it is very much dependent on the kind of a youth's power and youth's innovation. And for that matter, the government has envisioned to have a national education policy in 2020 to make India a global knowledge superpower. That way, we have so much of dimensions within the ambit of the NDP 2020. However, I'll be just picking up a couple of points which may be of immense value and relevance as for the vocational education and the skill development related things. Yes, we know the important agenda for NDP 2020 is to become the global knowledge about our session. Also, it has been highlighted. By 2025, 50% of the students starting from class 6 onwards are to be provided exposure to the vocational education. It's a very, very challenging task. And at the same time, the gross enrollment ratio in higher education stands at 26.3 in 2018, when this NEP 2020 has been prepared, and is trying to achieve 50% of the gross enrollment ratio by 2025. That means the next 13 years down the line, we are to almost double the gross enrollment ratio in higher education. At the same time, skilled manpower requirement, India is envisioning to attain $5 trillion economy, and then what could be the talent landscape that India is supposed to have, and also the kind of industrial revolution 4 is coming up. The blockchain technology, the artificial intelligence, and big data analytics, and we need a different kind of a skill set. Maybe the kind of a job roles which we are having today, in the next 10 or 20 years down the line, 30% of the job will be vanished, and another 20 new jobs will be created. That's the kind of a challenge we are experiencing today. So that's why, in order to become India a global superpower, we need to train our young people in the right direction. And for that matter, to have a Atmanirbhar, I can just sit with it from two angles. One is for the northern region to have a self-sufficiency kind of education system is the one, and the Atmanirbhar through education and the skill development. If we have a right kind of education system, not following the beaten tracks, not following the traditional and conventional way of the things, and probably we may be able to contribute better in the growth of the nation through the increase in GDP. And for that matter, employment generation, employment creation, right kind of a human resource development is very much need of the hour. And of course, we have so much of other agendas. I need not to talk much of it about the multidisciplinary aspects or the academic bank of credit
and also establishment of various startup centers, incubation centers, and making the entire higher education system in the global arena. That means internationalization of the higher education system. These are a few important agendas in the NEP 2020. Well, ladies and gentlemen, we can have a brief look about the Indian population dividend. All of us quite aware, but I just wanted to reflect India becomes the youngest nation in the world because 40% of the population out of the 1.25 billion is under 18 years. And 54% of the Indian human resource pool below 35 years. And 65% of the entire population belongs to the age group 15 to 59. So that is what India is having today. It's not the case in many other developed nations like US, Japan, Germany, so on and so forth. So that's why I'm just going back, we are to see to it. The various other aspects about the changes in the school education system. I will touch much on it about it skill education part, but some of the concerns which we are to see to it in the education system is the employability. The focus in studies in skill education, multiple entry, gathering bank of credit, and establishment of national business foundation, MOOCs, SWAYAMs, and online platforms. These are some other important elements. That's why it is I'm focusing on the employability, because so far India produces so much of graduates. How about their absorptions and employability in the job market? That's a very big question. So that's why to move ahead with the employability in the other aspects, some other information which I just would like to share is for becoming a developed nation, 30% gross enrollment ratio is a prerequisite. As for India, it stands at 26.3. And other developed nations like US is 81.1, 94.9 for the UK, Japan is 63, and that matter even China has already touched 54.4. So that's why we need something in our education system. Employability is not a big issue. And to talk about the technical aspect, how they will become acceptable in the job market. Of course, it requires some sort of a skill set, knowledge, and personal attributes to make acceptable in the job market. So for that, we can just sit with the kind of a skill training India is providing today. For the small countries like South Korea, the entire workforces, before they join for any employment, they got skill training. That means 96% of the workforces, they got skill training some way or the other. In Canada and Japan, 80% is 75, UK is 68, and even smaller developing countries like Mexico, they are getting 24%. Whereas India stands at only 10%. And out of this 10%, only 4% is in the formal sector, whereas 6% is in the informal sector. That's the state of affairs about the skill training and the vocational education in our countries. That's why we need to strengthen this thing. And for that matter, I'll show you one example. China is now hosting manufacturing. I'm very much thankful to our Honorable Prime Minister. They have come out with a very flagship program like Make in India program, Atmanirbhar Bharat, Digital India, and a whole lot of things. Reason, the Apple phone which we are using today, it is designed by US, but the manufacturing thing is done where? It is in China. Why? US loves China very much? No. But they are compelled to make their manufacturing done in China because the kind of skilled workforces available, the number of skilled workforces available they are not making the right kind of in the US.
assembled, manufactured in China, and selling across the globe through Europe. So that means what we require to see the global value chain happening and where India can encash the benefit. And for that matter, we are to focus on the skill development, especially for the young minds. So, ladies and gentlemen, one very important data which I would like to share about the employability. India produces how many engineers in a year? Approximately 3.6. This is around 4 lakhs plus right now. That varies year to year. And then general graduates, about 6 lakhs, 6 to 7 lakhs. Out of which only 25% of the engineers are readily employable and 75% is not. And for the general graduates, only 10% is readily employable, BA, BSc, BCom, then 90% is not. That's data given by the McKinsey's Global Institute. NASCOM also says that only 18% of the Indian graduates are employable. That means you take the average, it turns out to be 17.5, that means 18%. Why such a very less number of fresh graduates are employable? Why not the rest? Because they are lacking some sort of skill sets. So that's why we need to focus more on the skill development. So human skills, communication skills, soft skills, life skills, problem solving, creative thinking, critical analysis, professional skills, technical analysis, so on and so forth. So that's why even if you are very good at the technical knowledge, but not that much comprehension in the soft skill and interpersonal relationship, you are not that acceptable in the working environment. So that is what we are to see to it. So keeping all these things in mind, we are to see to it a different kind of a restructuring in the education system. So educated, unemployed youths increasing alarmingly in all the states. Even in a small state like Manipur, we are having now 7.5 lakhs unemployed educated youths out of 25.5 lakhs. By now it is crossing around 30. That means 20 to 25% belongs to the educated unemployed youths. Very alarming. India is also having 6.1%, but during the COVID time, it touched around 29%. Whereas for the world as a whole, it stands at 4.9. So that's why it's a very, very critical point we need to address it. At the same time, self-employment, promotion of the job, everything is very much important. That's why in the curriculum, we are to incorporate all these aspects very well. But at the same time, we are also having so much of challenges because India is having more than 30 crore people living below the poverty line. That means around 20% of the entire population lives below the poverty line. That's why providing all sort of facilities to each and everyone may not be that possible. It's a big challenge for any of the policy planners. But the only need of the hour today is the vocationalization of the education. And with that, what we are just trying to promote, because vocational education and the skill development are the drivers for increasing productivity, economic generations of individuals, profitability of the employers, and finally the growth of the nation. Because the employment generation, growth of GDP, all these things are linked closely. And that's why promotion of entrepreneurship and the job seekers are very much needed of the hour. That's why we can just make our youth more employable. So, ladies and gentlemen, we can just see to it for the implementation of the NEP 2020. We need to have some sort of a timeline of the agenda in the next 3 years, 5 years, 10 years down the line. What are the things to be done? The kind of courses to be introduced, the kind of systems about multiple entry, exit, everything needs to be taken care of along with the industry academia partners. So, especially in the state, in the northern region, industry participation in the education system is relatively less compared to the other mainstream educational institutes. So that's why we need to find out some modalities of how the industry people can be brought in
and the syllabi, everything could be designed as per the industry demand. That's the need of the hour. And at the same time, we need to encourage startup incubation centers. At the same time, we need to have a proper benchmarking in the global arena. If we don't keep our benchmark higher, we will not be able to attract good students, in spite of the fact that you are providing all the infrastructure facilities, things may not work. So that's why moving ahead, vocational studies and the skill education is a very much need of our, is the important agenda in the NEP 2020. So that's why starting from class 6 onwards, people have started. CBSE has already introduced in the pre-vocational area. On the backlist days, they will be given the opportunities to visit various other industrial houses. Then from class 9 and 10 onwards, we will be having the level 1 and level 2, the national skill qualification framework. Then from class 11, 12 is the level 3 and 4. Then level 5 onwards, we are just having the higher educational ambit, that is the BABSC equivalent. So that's why we need to just situate the various other areas of how the professionalization can be taken up in the higher education. And in fact, UGC had already given the approval to have the equivalence of the BPAP degree with any of the degree courses like BA/BSc in BCom for the employability of the UPSC, SSC, and any other banking services where any graduates can apply. And even for the transdisciplinary upward mobility, the BPAP degree can be treated as equivalent to any other degree. That's why it is becoming a very, very popular subject of late, but the awareness is very low. So that's why she had already given the equivalence from the certificate, diploma, advanced diploma, then degree, postgraduate diploma, and postgraduate degree. That's why today, within the ambit of the NEP 2020, National Higher Education Qualification Framework had been introduced, and that also we have just seen the various other aspects. That is the vocational education. I'm just showing this slide. Then you can also just see to it about the NSQL, National Occupation Standards, and the qualification packs, etc. Then National Higher Education Framework, we have a multiple entry and multiple action. So level 5 is a bachelor certificate, level 6 is a bachelor diploma 2 years, level 7 is the bachelor's degree 3 years, level 8 is the bachelor honors or the research or the postgraduate diploma, and level 9 is the master's degree, level 10 is the PhD. So that is the kind of a level systems coming up, and with that, we are also just having a few aspects in the curriculum, core papers, discipline specific, generic electives, ability enhancement, value added, skill enhancement courses, etc. So when we talk of the skill enhancement paper, some of the vocational related courses can be introduced as a part of the choice-based credit system whatsoever. That is what we can just go ahead. So for that matter, we need to have a vision or mission or ambition. I mean, in the next 5, 10 years down the line, what you would like to see your university, college, or institutions. Accordingly, we need to have a proper planning for that. We cannot hit the big things at one go. So, bit by bit, slide by slide, we need to implement it. The entire aspects of implementing the NEP 2020 can be taken up piece by piece or slide by slide. That is depend. I just would like to focus for this kind of education in a holistic manner. That is the holistic outcome of learning of this approach is 3 important things: the knowledge, skill, and the attitudes or the behavior. So the knowledge is the cognitive, skill is the psychomotor, value, application, affective. So these are the 3 important aspects we need to focus. But many times in a conventional way, we are focusing only on the knowledge aspect. Skill is relatively lacking, and finally, as a holistic things, we need to see about the behavior of the students, attitudes. So my dear young friends, especially when you just try to take up
these things, try to get these three. Plus, I just would like to add one more. That's why, in short, you can remember as a KAHI. K-A-H-I. K stands for knowledge, A stands for attitude, S stands for skill. And if you have all these things, you have to add one more, that is habit. If you are developing a good habit with all these three, nothing like that, you definitely will become a successful individual. So that's why, my dear young friends, the habit you have today will determine your future. Young friends, let's focus on this part. With that, we can just see to it how we can align the entire education system, the talent landscape of $5 trillion economy. The traditional way of doing the things may not be able to achieve these things easily until unless we have a radical change in our workforce setting, in our activities, in our economic activities for the growth and development in all the sectors. Maybe the primary, secondary, tertiary. All these things we need to focus on. So curricula based on industry demand, located level, vocational resources, and put all these things within the ambit of multidisciplinary approach and academic banks of credit. So some of the areas where we can just see to it about these benefits of the students exposure, internship, community engagement, students faculty exchange programs within and outside, and some of the tangible and vocational areas which we would like to do. This is not the end thing, end number, but at least the relevant things are agribusiness, decomposing, food processing, agriculture, floriculture, these are few tourism and IT-enabled services, etc., including the logistics in warehouse. These are an important area of concern, especially for the reasons of the notice. Two. Okay, so that means bamboo is available in plenty in the Northeastern Basin. So my just simple question is, do you have any kind of a course to study bamboo in the entire Northeastern region? I believe very less. Not a single university is offering bachelor's degree in bamboo technology or the master's degree in bamboo technology, except a few here and there research. But the availability of bamboo, around 30% of the entire world's bamboo production comes out from the Northeastern region. So young friends, we are not tapping the potentials which we are having. We are just holding the diamond, not polishing it. So for that matter, we need to focus on the vocational education. Through vocational education, we can just come up the floriculture, the bamboo technology, even the long stem flower costing about $2 to $3 in the international market. If we just one of these things, economically, it may be viable, environmentally, it is eco-friendly, and this is how we can just increase the benefit. So, finally, but not least, I just would like to suggest at least all the universities and colleges should have a department or a center for vocational studies and skill development, so that all these kind of a vocational things can be introduced in a befitting manner, not as a small kind of a things won't work, because we need to provide a strong recognition to these aspects. Secondly, establishment of the startup and incubation centers in every universities. It is very much need of the hour. The kind of a creative and innovative talents our young people are having, we are not providing the right opportunities for them to test and enter in the industry. Finally, but not least, I must again emphasize in presence of many of the honorable vice chancellors present here, integrating entrepreneurship and vocational studies in the choice-based credit systems of the UGC's guideline. If that is the case, our young boys and girls can have ample opportunity to study any stream of study and some trades wherever they think it will be of immense benefit in future, they can take up. So
So concluding note, which I would like to share, if India is to transform into a true knowledge superpower and realize a future of prosperity and growth, a radical change of the education system with quality and innovation in the central is a primus essential in the light of the new global trends happening. That's why I believe that NEP 2020 definitely be paying a new vista for transforming India into a global knowledge superpower. And for that matter, all the stakeholders are to have a concerted effort. So, last but not the least, which I would like to share is that in a vast jungle, there are so many animals. Of the animals, I just pick up only two. One is the gazelle, the deer kind of animal. Another is a king of the animals, that is the lion. What they are doing every morning, when every morning the gazelle wakes up, it knows that it must be running faster than the fastest lion, otherwise it will be killed. And this lion also wakes up every morning. It also knows that it must outrun as slow as gazelle, otherwise it cannot catch its prey. That means it will die on starving if it is unable to catch its prey. My point to share, ladies and gentlemen, it doesn't matter you are a lion or a gazelle. When the sun comes up, we better be running. It doesn't matter whether we are a small state, big state, a poor state, rich state. We must put our efforts well to be the best. Only then we may be able to survive. Otherwise, we will face the consequences. Consequences of a lion or the gazelle is the same. So, young friends, the future lies in the hands of you people. And if you are envisioning to make India great, it is your efforts, your caliber, your talents, your innovative ideas only. That's why try to encash all this benefit through the new education policy, NEP 2020, aligning with the vocational education. I believe India can become a vibrant country in the years to come. With that, I wish all the best. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. It's a very informative talk, and I think it is high time for the educational institutions of the country to think about how to implement the vocational aspect of education so that the philosophy of NEP can be implemented in time. Now I request Priti Sudhaji to deliberate on the issue. सभी को प्रणाम। आदरणीय मंचासीन प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद दास जी, कुलपति हैं कृष्णकांत हांडी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी के, आदरणीय त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बसिंग जी, आदरणीय मंचासीन और सभा में उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्तियों, नॉर्थ ईस्ट के सारे छात्रगण, देवियों और सज्जनों, मैं डॉक्टर प्रीति सुधा मेहर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ NIT अरुणाचल के, और अभी यहाँ पे मुझे बोला गया है NEP 2020 वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर कुछ बोलने के लिए। और कल मैं यहाँ पे उपस्थित हुई आई जस्ट, और उसके बाद तुरंत मुझे बोला गया कि आज आपको कुछ बोलना है वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर। तो मैं हैरान रह गई कि यार मैं क्या बोलूं जाके। कल सुबह बोलना है, आज शाम को मुझे तिमिर जी ने बोला है, ठीक है। तो जब मैंने ये सुना उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी शॉक हो गई। मैं सर मुझे बोले कि मैडम फिर सिर्फ 20 मिनट बोलना है। बोली ठीक है, मैं बोल दूंगी जैसे भी हो, ठीक है। और मैं एक्सेप्ट कर ली उस चीज को। पर उसके बाद मैं हमारी बैठक हुई शाम को बैठक होने के बाद फिर मैं रूम में गई, और सर रूम में जाने के बाद मैं याद की कि NEP 2020 में है क्या। मैं पहले याद की NEP 2020 में है क्या।
देखिए स्टार्टिंग से एंड तक पूरा वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर है। स्टार्टिंग से एंड तक जो भी है, जो भी लिखा हुआ है उसमें, वो सारे समझते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग को। तो कुछ बोलना नहीं है यहाँ पे। सर तो बहुत कुछ बोले, पूरा पढ़ा दिया आप लोगों को, मैं बोलूंगी नहीं। मैं यहाँ पे एक प्रोफेसर के तौर पे नहीं, एक न्यास के कार्यकर्ता के रूप पे हूँ, और न्यास का काम ये है कि आप लोग को कैटलाइज करे कि आप कैसे इस दिशा में काम करें, आपको इस चीज में कैटलाइज करें, आपको प्रोत्साहन दे। ठीक है, तो आप देखे हो कि हर रिसर्च, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, रिसर्च से पहले क्या करते हैं, लिटरेचर सर्वे करते हैं। तो थोड़ा लिटरेचर सर्वे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो लिटरेचर सर्वे करते वक्त मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। आप यहाँ से लोग थाईलैंड तो गए होंगे, बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है थाईलैंड। लोगों के पास थोड़े से भी पैसे हो जाते हैं इंडिया में तो लोग गोवा जाते हैं, जो शौकीन लोग होते हैं थोड़े थाईलैंड चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन थाईलैंड जाने के बाद वहां के जो सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट है, वहां पे उतरने के बाद आप देखे हैं एक प्रतिमा है, मतलब समुद्र मंथन की एक वो है। ठीक है, वहां पे रखा हुआ है, और थोड़ी आगे जाएंगे तो एक मैप लगा हुआ है उसमें। तो वो मैप में जो आपका पेशावर जो पुरुषपुर है, वहां से लेके जो अफगानिस्तान का पुरुषपुर था, वहां से लेके जापान के पापुआनगिनी तक एक सिंगल मैप में दिखाया गया है। ठीक है, और उसके ऊपर लिखा गया है इंडियन एम्पायर, उसके ऊपर लिखा गया है इंडियन एम्पायर, और उसके नीचे थाईलैंड वालों ने लिखा है कि वी आर प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट। किसी जमाने में भारतीय सभ्यता के एक अंश होने के कारण हम गर्वित हैं, ये लिखा हुआ है वहां पे। और वो लोग गर्वित हैं, हम गर्वित नहीं हो सकते कि हम भारतीय सभ्यता के हैं। और उस जमाने में जब वो अखंड भारत हुआ करती थी, उस जमाने में ये जो संस्कृत है, ये संस्कृत एक राजभाषा नहीं होता था, संस्कृत लोक भाषा हुआ करता था। लोग घरों में संस्कृत बोला करते थे। ठीक है, और ये एनईपी जो पहले न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी जो पहली वाली थी, पुरानी वाली थी, ठीक है, वो जब अंग्रेजों ने उसको दिया था हम लोग को, कि अंग्रेजों में और हम भारतीय में एक चैनल बनाने के लिए दिया था। हम लोग की भाषा उनको समझ में नहीं आती थी, और वो लोग चाहते थे कि हम लोग को अपना दास बनाए, कृतदास बनाए और काम कराए अपना। तो वो चैनल कैसे क्रिएट होगा, उसी के लिए वो लोग अंग्रेजी में एनईपी बना दे। ठीक है, तो ये एनईपी हम लोग अंग्रेजों को छोड़ दिए, अंग्रेजी भाषा को नहीं छोड़ पाए, और हमको लगता है कि इंटरनेशनल बिजनेस जो हो नहीं पाएगी अगर हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जापान बहुत आगे है इंटरनेशनल बिजनेस में, लेकिन जापानीज लोग, उनके प्रेसिडेंट, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, कोई जापानीज छोड़ के इंग्लिश नहीं समझते हैं। एक इंटरप्रेटर होता है बीच में जो कि समझा देता है बीच में, लेकिन वो लोग इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत आगे हैं। नालंदा में लोग पढ़ने आते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपके संस्कृत में हुआ करता था, तभी लोग सीखते थे, आके पढ़ते थे उस समय में। तो ये संस्कृत भाषा लोग सीखते थे, आके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते थे, फिर संस्कृत में पढ़ाई करते थे, फिर जाते थे। अभी तो उनके लिए इजी है, तो फिर यूएसवी से हम लोग के पास कोई स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज में हमारे न्यास का भी बहुत प्रयास रहा कि हम लोग कैसे ये एनईपी को और ये कैसे हमारे भाषा को का इम्प्लीमेंट करें, स्वदेशी भाषा का इम्प्लीमेंट करें। तो इसके तहत जैसे कि जो एनईपी 2020 आया है, उसकी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपके 5+3+3+4 का रूल है। जैसे सर पूरा बता दे 5+3+3+4 का, उसके अंदर में जो लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। पहली स्टेज है उसका फाउंडेशन स्टेज है, और जिसमें कि प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है? ये तो सीधा आपका व्यवसायिक शिक्षा लोगों को क्लास 1-2 में दिया जा रहा है।
ठीक है ना। फिर सेकंड है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी और इंटरेक्शन की बात किया गया है। आपके साथ कुछ खराब भी कर रहे हैं। आप सोचिए, आप लोग हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन वाले हैं, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सब पीएचडी वाले, हाईएस्ट एजुकेशन वाले हैं, तब भी फ्लाइट में जाते हैं आते हैं, हम सोचते हैं कि कैसे पैसे रियम्बर्स हो जाए इंस्टीट्यूट से, इसी का प्रयास रहता है। उसी जगह एक बिजनेसमैन आता है और एकदम बिजनेस क्लास में ट्रैवल करके निकल जाता है, उसके खुद के पैसे से बिजनेस क्लास में ट्रैवल करके निकल जाता है। तो ये कोई मतलब ये मामला नहीं है कि मैं आप कोई घाटे में भी नहीं रहोगे, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजों की समझ जरूरी है। जैसे कि हम जैसे कि मारवाड़ी लोग का होता है कि हाँ बेटा, छोटा छोटा बच्चा रहता है वहां पे बैठ के ये दिखाओ ये लाओ, इतना छोटा छोटा बच्चा ट्रेंड होता है पूरा वो सब चीज में। लेकिन ये चीज की बात मोदी जी नहीं कहते हैं। मोदी जी वो चीज नहीं बोलते हैं कि बिजनेस करो, मोदी जी बोलते हैं कि कुछ चीजें हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइक डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज कब होगी, ऐसे हमको ऐसा नहीं है कि क्लास 10-12 में जाके सीधा बिजनेस संभालना है, ऐसी बात नहीं है। हमको कुछ नया करना है, कुछ नया चीज बनाना है, नया चीज नए तौर से उसको उसका जो है प्रमोशन करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो आपका न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चीजें हैं, लाइक आपका 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है वो। 360 डिग्री असेसमेंट के में आपका सेल्फ असेसमेंट मीन्स हिंदी में आकलन, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट है, टीचर्स असेसमेंट है, पीयर असेसमेंट है। तो आपको परख के लोग देखेंगे कि क्या एक्चुअल में है, ये क्या होना चाहिए, ठीक है। आप कौन सी चीज में कैपेबल हैं। तो हर कोई हर चीज में कैपेबल नहीं होता है, ठीक है। और जैसे कि कल आपके नेहरू के वाइस चांसलर सर भी बोल रहे थे कि हर यूनिवर्सिटी में लोगों को थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट्स को घुमाना चाहिए। यूनिवर्सिटी में कुछ तो मतलब पानी का प्रॉब्लम हर जगह में है, पर इस यूनिवर्सिटी में पानी का प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। उसी तरीके से हर किसी का पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव चीज है। इसीलिए शिक्षक हमको कुछ सीखना है। खुद एक शिक्षक है, तब भी दूसरे शिक्षक से भी हमको सीखना है। शिक्षा जो है, टीचर्स एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये सपोर्ट करता है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो शायद समय हो गया है, अभी सब लोग का चेहरा से पता चल रहा है। पर एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो नेशनल एजुकेशन ड्यूरिंग कोरोना, आपका मोदी जी जब सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताए थे, वो स्टार्टअप इंडिया के बारे में बताए थे। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत वो जैसे स्किल इंडिया, कौशल भारत, स्टार्ट और आपका डिजिटल इंडिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अग्नि, ये सब स्कीमें हैं। मैं में नहीं जाऊंगी, ये सब स्कीमें बताते जाऊंगी, 2 घंटा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये सारी नहीं बताऊंगी, लेकिन ये सारी स्कीमें सपोर्ट करते हैं आपके वोकेशनल ट्रेनिंग को ही।
मैं इतना बोलूंगी स्टार्टअप इंडिया जो कि है आपका स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन में नई चीजें बनाओ और उसका सपोर्ट, जो पैसे का सपोर्ट सरकार करेगी। स्टार्टअप इंडिया, नई चीज बनाने की जरूरत नहीं है, नया काम शुरू करो, उसका सपोर्ट ये करेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। उसका भी एक प्रेजेंटेशन मैंने दिया था सर JNU में भी सर, आपको याद होगा। तो यही चीज है कि हम लोग अपने हिसाब से अपने जो क्या बोलते हैं, अपने आप को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और ये न्यास के साथ मिलके, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के साथ के कोलैबोरेशन में NIT अरुणाचल प्रदेश में अभी मणिपुर में एक 5 दिवसीय वर्कशॉप किया है। मैंने जस्ट वही वर्कशॉप से अभी आ रही हूँ, और मिट्टी की बर्तन बनाने का, जो सेल्फ रिलायंट इंडिया के अंडर मिट्टी के बर्तन बनाने का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए थे हम वहाँ पे, और जो कि 5 दिवसीय वर्कशॉप थी, और बहुत अच्छा आउटपुट भी मिला उसका। बहुत कुछ बच्चों ने सीखा भी वहाँ पे कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो सकता है, और वो इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि हम लोग जो प्लास्टिक की ग्लास, प्लास्टिक की प्लेट यूज करते हैं, उससे ज्यादा वो इको फ्रेंडली है। और अभी मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि ये न्यास जो है इस दिशा में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और न्यास एक्सीलरेट कर रहा है लोगों को कि, और सारे इंस्टीट्यूट में कि कैसे NEP इम्प्लीमेंट हो, आत्मनिर्भर भारत हो। और इसी के तहत बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज लगे हुए हैं, इसीलिए सर खुश है मेरे बात सुन के। तो सर थैंक यू सर, आपने बहुत कुछ किया है नॉर्थ ईस्ट के लिए। राजेश्वर जी ने भी बहुत कुछ किया है न्यास के थ्रू से, और अभी परसेन सर का भी बहुत हाथ है NEP का इम्प्लीमेंटेशन में। तो अभी लोग आना चाहिए, कैसे व्यवसाय बढ़ेगा, कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, कैसे अपने हम लोग आत्मनिर्भर होंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, अकेले कर सकेंगे। तो अभी समय आ गया है ये देखने का। एक पंक्ति के साथ खत्म करूंगी मैं। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद आएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद आएंगे। छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। जूत बिछाए बैठे सकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी का विराम दूंगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, Preeti Sudha. Both my speakers in this session, though it was very short, but very sweet, very meaningful, very informative. The conclusion is the time has come, not for lunch only. The time has come for realization, self-realization, that we should not speak. We should now think about, we should start implementing the spirit of national education policy in toto in all educational institutions, starting from schools to college to universities. My first speaker, Professor Iqbal, has given a very clear-cut message and very informative data that what is to be done. And it is the educational institutions, both in the country, in the central universities and state universities, private institutions, they have to work immediately in this direction so that we should see the result of national education policy. We should see that we should fulfill the dreams of our Honorable Prime Minister. We should see that it should be a Swavalambi Bharat. And Preeti Sudha has given many examples, real life examples. We have to now stand. We have to now see that we should be independent enough.
we should be job providers than job seekers. Then only that will be the greatest tribute to the National Education Policy 2020. It's a high time for all of us to join lunch. Thank you very much for your patience listening. Thanks to the organizer, especially the Honorable Vice Chancellor of Tripura University, Pasrai ji, and Dr. Tripathi ji, Rajeshwar ji, Honorable, my friends, Honorable Vice Chancellor, Professor Singh, Honorable, my friend, Honorable Vice Chancellor, Professor Purvottar Das, Professor Shukla ji, and all other delegates who have spared their valuable time to listen our this session, and I hope it must happen in all of you. Thank you very much. सभी को नमस्कार। अब मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर गंगा प्रसाद परसाई सर से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अतिथियों का सम्मान करें। सबसे पहले प्रोफेसर राजेंद्र दास सर का, माननीय कुलपति गांधी विश्वविद्यालय गुवाहाटी का सम्मान करें। माननीय मैती सर का सम्मान करेंगे। अब मैं प्रोफेसर प्रशांत दास सर से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और माननीय मेहर मैडम का सम्मान करें। धन्यवाद। आप सभी भोजन के लिए आमंत्रित है। हमारे अतिथि गृह में सब के लिए व्यवस्था है। और 3 बजे पूरा अगला जो तकनीकी सत्र है शुरू होगा, उससे पहले आप लोग यहाँ पे आ जाए।